everyone and welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is 𝗟𝗲𝗀𝗏 and I hope everyone is doing really good today. I hope you guys have been working very hard. I hope you guys have been solving a lot of questions and I hope I am clearly audible and visible to everyone watching me live. Good evening everyone. Good evening Tulika and everyone else. If you could quickly confirm that I'm clearly audible and visible, we shall commence with a very interesting session today on resolving the paradox. ये मेरा favorite topic है critical reasoning में. And I'm sure इस session के बाद आपका भी favorite होगा. Good evening everyone. Good evening. एक बार जल्दी से confirm कर दो. Yes, confirmation हो गया है. I'm clearly audible and visible. तो आज के सेशन में क्या करने वाले हैं? We've had 5 sessions on ma'am, there is a class on yes Garima, so you'll have to choose. ठीक है. So we've had 5 classes on basics of critical reasoning और हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी critical reasoning में over the course of these classes. This is yet another class जिसमें हम critical reasoning के एक और टॉपिक का बेसिक समझने की कोशिश करेंगे, that is resolving the paradox. ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये बेसिक क्या है, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं और इसके बेसिस पे हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. कितने फ्रीक्वेंटली आते हैं ये एग्जाम में, कौन कौन से एग्जामिनेशंस में आते हैं, ये सब डिस्कस करते हैं. यस गरिमा, यू विल हैव टू टेक अ कॉल ऑन व्हाट टू वॉच. ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट दिस, तो और चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी. अब रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स की बात करते हैं एक बार. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग में सर्टेनली आते हैं बोथ द एग्जामिनेशंस में, क्लैट और AILET. स्पेसिफिकली अब क्लैट में क्योंकि पैसेज बेस्ड और AILET में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं, रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स टाइप क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली यू सी देम in both these examinations. Okay, so certainly you will get time for English should be 3 to 4. Yeah. So this kind of question is very likely to be asked in the examination. अब ये question type समझते हैं, ये question आपसे पूछता क्या है resolving the paradox, और फिर समझते हैं कि आपको इसमें करना क्या होता है, what should your approach be to get the correct answer. Okay, and it's a very interesting topic. अगर आप logically थोड़े भी sound हो ना, आपको ये टॉपिक बहुत इजीली आप मास्टर कर सकते हो. ये 1 मार्क आपके पॉकेट में होगा. समटाइम्स 2 to 3 क्वेश्चंस आल्सो अपीयर इन एग्जामिनेशंस, तो ये 3 मार्क्स आपके पॉकेट में होंगे. एक सिंपल सा टेक्निक यूज करना होता है इसमें हमको. तो समझते हैं रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स होता क्या है और अप्रोच क्या होती है. पैराडॉक्स सबसे पहले समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज अ पैराडॉक्स. पैराडॉक्स इज टू कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशंस which should not have existed together. बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन है, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा हो रहा है. ये एक लेमैन लैंग्वेज में पैराडॉक्स होती है. और जब इस पैराडॉक्स को आप रिजॉल्व करते हैं, आप लॉजिकली एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये वियर्ड सी सिचुएशन अकर क्यों हो रही है. जब आप उसको एक रीजनिंग देते हैं, आप रिजॉल्व करते हैं अपने पैराडॉक्स को. आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस अगेन विद एन एग्जांपल. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पुलिस स्टेशन में आग लग जाती है, देखो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा हो क्यों गया. एक सिंपल एग्जाम्पल है 1 लाइन का. ये एक पैराडॉक्स का एक सिंपल एग्जाम्पल हो गया. अगर आप ग्रेजुअली उसको, इफ यू ट्राई टू मेक इट मोर डिफिकल्ट, इट कुड बी सिचुएशनल पैराडॉक्सेस, व्हिच इज द काइंड ऑफ थिंग that comes in the examination. What is a situational paradox? According to the existing circumstances, this output should not have happened. Why does it happen? How does it happen? When you find an answer to how does it happen and why does it happen, you resolve the paradox. So let me give you a typical example of a paradox. I want all of you to read this paragraph. इसको एक बार डिटेल में तरीके से पढ़ो. इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि यहाँ पैराडॉक्स है क्या और इसको हम रिजॉल्व कैसे करें. जस्ट रीड दिस पैराग्राफ एवरीवन. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी गुड पैराडॉक्स that you might be asked to resolve. Here you go. Read this, process it in your mind, and then send me a done in the chat box. Then we'll talk furthermore.
Send me done once you're done processing the paragraph. Some people have sent me done. Iram, read the paragraph very quickly. Okay. तो इस पैराग्राफ में एक weird सी सिचुएशन है. A situation that should not have occurred. It's illogical. This illogical occurrence of a situation is the paradox here. You will have to give us a reasoning why this situation is not illogical, it is a logical one. So, I hope you understand the kind of questions you would be getting in the examination. It's a typical sample question जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. तो पैराडॉक्स ढूंढने में आया सबको. Were you able to identify the paradox here? Can you point out a line to me which will explain the paradox to you? Could you figure it out from the passage? Could you identify the paradox here? कोई एक लाइन है जो आप पॉइंट आउट कर सकते हो जो इस पैसेज का पैराडॉक्स निकाल के देगी हमें. लेट मी सी कितने लोग ये पैराडॉक्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं. I'll wait. आंसर मेरे पास किसी का भी नहीं आया तो मुझे लग रहा है समझने में. ओके, धनंजय हैज वन गेस. आई हैव ओनली वन आंसर. ठीक है, चलो इसको एक बार पेंडिंग रखते हैं. एक और पैराडॉक्स का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, द कंपनी मैनेजमेंट्स क्लेम that the morphine will become major driving but. I'll buy your point, Garima. Okay, so the situation here is that this laboratory, the pharmaceutical firm that is named as Labs, it has developed a medicine called morphine. Okay, morphine नहीं है, morphine है. और morphine develop कर दिया. It resolves some lung disorder which was previously untreatable. Let's take the example of a COVID vaccination. It was initially untreatable, but then the vaccination was developed for COVID as well. Okay, but उस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, morphine को डेवलप करने के लिए, the pharmaceutical firm Labs had to spend a lot of money. Okay, also remember this expense. Now, when an organization incurs this amount of expense for creation of a medicine, the organization will recover the expense from whom? वो किनसे रिकवर करेगी अपने एक्सपेंस? अगर मैं मान लीजिए ये पेन बनाने में एक्सपेंस डालती हूं, तो फिर मैं ये एक्सपेंस कहां से रिकवर करूंगी? ये पेन सेल करके मार्केट में मैं उसी तरीके से मेरा ये पेन का कॉस्ट रिकवर कर पाऊंगी. राइट? तो $8 बिलियन पहले रिकवर करना है इस कंपनी को सेल करके अपनी मेडिकेशन. दूसरा, साइज ऑफ द मार्केट जो है ना, जो morphine कंज्यूम करेगा, वो भी बड़ा छोटा है. तो इस सिचुएशन को पढ़ के क्या आपको लग रहा है कि morphine बेच के labs can make a lot of money? What do you think? Yes or no? Given the current situation that it has invested $8 billion in the market for research and the end consumer market size is very small. क्योंकि ये जो डिजीज है प्रोबेबली एक रेयर डिजीज है, शायद 1% जनता को होती है ये वाली इशू. Will you agree that this entire situation will help the firm to make profit or not, according to the given situation? Will the consumer help the firm make profits out of selling morphine? Yes or no? No, because even if you sell it at very high cost, the end market size is really, really small.
अगर सिर्फ 1% जनता मेरी मॉर्पाइन खरीदेगी तो मैं प्रॉफिट कहां से बनाऊंगी? कितने कॉस्ट में बेच दूंगी उनको मैं? मिलियंस में तो नहीं बेच सकती, ना बिलियंस में बेच सकती, तो मुझे ये प्रॉफिट बनाने का मौका नहीं मिलेगा। Yet the contradictory situation is that कंपनी मानती है मॉर्पाइन उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट हो जाएगा। भाई ये कैसे हो गया? सिचुएशन देख के तो लगता नहीं है कि आप प्रॉफिट बना पाओगे, क्योंकि साइज मार्केट का बहुत छोटा है, इन्वेस्टमेंट भी तुमने बहुत सारा कर दिया, खरीदने वाले लोग भी बहुत कम है, देख के लगता नहीं आप प्रॉफिट बना पाओगे। येट कंपनी का क्लेम है कि मॉर्पाइन विल बी one thing that will give them maximum amount of profit. How on earth is that possible? Do you see a fallacy in the argument? Everyone, are you able to identify something weird as an output? ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो होना नहीं चाहिए सिचुएशन है, इसको हम पैराडॉक्स बोलते हैं। Were you able to understand what exactly is the paradox in the question? The paradox is to reach profitability, it will be very difficult for the company because of the amount of investment they've put in. Yet, the company claims that this will be the most profitable product for them. So, ultimately, हम अपने paradox को कैसे define करते हैं? Paradox is a contradiction or an inconsistency in the passage. The moment we give it a reason why this inconsistency is acceptable, it is not an inconsistency, it's allowed. The moment we give it a reason, we resolve the paradox. हाँ धनंजय, that's a good example. ठीक है, तो अब इसका हम सोल्यूशन कैसे ढूंढते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं? क्वेश्चन टाइप आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो यही करते हैं कि उनको पैराडॉक्स ही समझ में नहीं आता। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग का एक बेसिक फंडामेंटल है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ। इफ यू डोंट गेट इट, every question that you solve is going to be by default incorrect, because you're ultimately going to be targeting something incorrect, some other line that's not going to help you. So the first step towards understanding this question and resolving this question is understanding the paradox. तो क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करो पैराडॉक्स वाले, तमीज is my favorite word, you know that, तमीज से उसको टाइम दो, पढ़ो उसको एक बार दो बार, ध्यान से देखो डूड इसमें ये इनकंसिस्टेंसी है क्या, इसमें इस पूरे क्वेश्चन में फैलेसी है क्या, मुझे वो फैलेसी ढूंढनी है, उस गड़बड़ को निकालना है मुझे। I have to figure out what exactly is wrong with the entire situation. The moment I figure out what is wrong, what is inconsistent, 80% of my battle is won there. So here we try to understand the example of labs, and we figured out the fallacy was labs claim that Morpine will lead the maximum amount of profits. It should not have happened looking at the situation of the investment and the size of the market. Good to go everyone? Understood the first step? Understand the paradox. क्या है inconsistency question में? First step. Let us move on to the next step. In your mind, think about what could lead to this fallacy. आप सोचेंगे क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसने इस fallacy को, just a minute. What could be the reasons that could have led to this fallacy? Can you think of a reason why the company could have claimed it? The moment you think of that, you can jump on to the options. तो एक पैराग्राफ देखते हैं, सोच के बताइए what could lead to the paradox in labs case. क्या कारण हो सकता है कि कंपनी फिर भी क्लेम कर रही है that Morpine will lead to generate profits, which looked inconsistent from the question. Can you think of a reason why the company could claim that? थोड़ा सोच के कोशिश करो, difficult है guess करना, but I would still wait
and I'll see if somebody could guess it. सोच सकते हो क्यों? क्या रीजन हो सकता है कंपनी क्लेम करेगी कि लैब्स क्लेम करेगी कि मुझे मॉर्पाइन प्रॉफिट देगा? थिंक. क्या कारण हो सकता है? एक एग्जांपल देती हूँ. गोइंग बियॉन्ड द लैब्स केस, देयर इज अ विलेज जहां सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, येट वहां पे ना बच्चों के कपड़ों का बिजनेस बहुत बूमिंग है. भाई सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, बच्चों के कपड़ों का बिजनेस क्यों बूमिंग हो सकता है? इनकंसिस्टेंसी है. आप रीजन दे दोगे, द मोमेंट यू गिव इट अ रीजन कि क्यों वो बिजनेस बूमिंग हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, वो सीनियर सिटीजन अपने उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो उनको विजिट करते हैं. एक रीजन हो सकता है ना. यहाँ एक रीजन सोचो. मे बी इट विल एक्सपोर्ट मोर एज देवर नो मेडिसिन देयर टू. गरिमा, मार्केट कुड बी वर्ल्ड वाइड 1% मार्केट, तो एक्सपोर्ट हेल्प नहीं करेगा. आपने रीजन सही सोचा है, बट इस ऑप्शन को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा. ओके, गो टेक इट. आई विल हेल्प यू आफ्टर द क्लास. All right. So that was my daughter. Maybe the case of lung diseases are on rise, Avi. I can buy your point. Good, Garima, very good, Avi, that you are trying to think, and that's exactly what I want you to do. I want you to think what could be a reason. तो आगे चलते हैं, देखते हैं रीजन आपने जो सोचा वो वैलिड था कि नहीं था. ठीक है, हम इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, वो चीजें जो रीजनिंग तो दे रही हैं बट करेक्ट रीजनिंग नहीं दे रही. अब एक ऑप्शन को हम एनालाइज करके देखते हैं लैब के केस में. रीड दिस रीजन. कैन दिस रिजॉल्व द पैराडॉक्स इन द क्वेश्चन? ओके, so back to the lab's case. Do you think this reason is a valid reason to resolve the paradox? Everyone. Yes, Ananja, you too. Acha, so Garima says no. No competitors are developing or planning to develop new medicine that might compete with morphine in the market. जब कोई कंपेटिटर मेडिसिन बना ही नहीं रहा, तो मेरी ही तो मेडिसिन सेल होगी लैब्स की, मेरे प्रॉफिट बढ़ गया. रिजॉल्व करना चाहिए ना. नहीं, नहीं रिजॉल्व करेगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट विल नॉट रिजॉल्व द पैराडॉक्स. This is why, through which I'm going to teach you how to eliminate the incorrect options. What was the paradox? The paradox was market size is small. ठीक है? Yet the company claims the profit is going to be huge. I have to say how the profit is going to be huge. अगर कोई कंपेटिटर ये मेडिसिन नहीं बना रहा, मार्केट साइज तो मेरा उतना ही रहेगा, राइट? इससे मेरा इनकम कैसे बढ़ेगा? This option does not give me a reason of increment in the income. My profit will increase only and only when my income increases. Now, income could increase if the market size increases. Income could also increase from various other reasons. But this option does not give me a reason of increment in the income. Did you understand this, everyone? Can you send me a thumbs up if you've understood why this option is going to be an incorrect one? Because it does not give a reason to increment in the profit, which will eventually lead to, ये एक assumption था ना कि increment in the profit ही मेरा increment in the sell and consumer base is only going to increase my profit. Exactly, Dhananjay. So understood, everyone? How this option will not work? Because it will not lead to increment in the income of labs. Thank you. On that note as well, did you hit the like button? If you haven't done that yet, please do that right away before we furthermore discuss how could options be correct. चलो तो आगे बढ़ते हैं. ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इनकरेक्ट ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करना है. देखने में लगेगा कि हाँ कंपेटिटर नहीं बना रहा तो मेरा ही तो प्रोडक्ट बिकेगा, लेकिन वो मेरा मार्केट साइज उतना ही रखेगा.
वो मेरी इनकम को इंक्रीज नहीं करेगा. It still does not resolve the myth that's there, the fallacy that's there. So we have to find out the most plausible explanation that absolutely justifies the paradox. The paradox was increased profit through this small medicine, morphine, and the small market base. I have to talk about increased revenue, increased profit. Keeping that in mind, read this option and tell me, will this option resolve my paradox? Yes or no? Yes or no? Does this resolve the paradox? Dhananjay and Avi, morphine medicine leading to huge profit. Inconsistent है. Huge profit तब होगा जब यही morphine medicine आपको increased revenue देगी, increased profit देगी. क्या ये ऑप्शन आपको increased profit दिला सकता है, धनंजय? Garima, if this is the option, can this option lead to increased revenue, increased profit through the same medicine and the same market base? The same amount of patients, the same number of medicines I could sell. उससे क्या मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है अगर मैंने पेटेंट ले लिया तो? क्योंकि पेटेंट हमेशा एक हायर कॉस्ट पे सेल होता है. और अगर ये ऑप्शन ये जस्टिफाई कर देता है कि सेम मार्केट बेस के साथ आप ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि वो जो मिसिंग लिंक था कि मेरे पास रेवेन्यू कम है, ये रेवेन्यू को बढ़ा दिया इस पेटेंट ने. रिमेंबर वो एग्जाम्पल, सीनियर सिटीजन्स का विलेज है लेकिन बच्चों के कपड़ों का बिजनेस बूम पे हो रहा है. क्यों? क्योंकि ये सीनियर सिटीजन अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए खरीद रहे बच्चे. रीजन दे दिया मैंने, ऐसा कैसे हो सकता है. तो यहां भी मैंने रीजन दिया कि ये इंक्रीज प्रॉफिट का जो क्लेम है लैब्स का, ये हो सकता है, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मार्केट बेस तो स्मॉल है लेकिन वो पेटेंट से कमाएंगे पैसा. ये पेटेंट कौन खरीदेगा? ये मार्केट बेस नहीं खरीदेगा, ये दूसरे प्रोड्यूसर्स, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स खरीदेंगे और फिर पेटेंट उनको एक रेवेन्यू इंक्रीमेंट देगा. उसी तरीके से ये लैब्स अपना रेवेन्यू हाईली जनरेट करेगा. सो I hope you understand how you're supposed to find a logical reasoning to resolving an inconsistency in the argument, a fallacy in the argument. This was the lab's case. Understood, everyone? Now, on that note, we're going to apply the same theory to one of the previous year's AILT question. 2017, this question appeared. इस जो एग्जाम्पल मैंने लिया उससे आसान क्वेश्चन है. Actual examination में it's going to be easier than this only. Try solving the following question. I'll give you 4 options and you have to choose one out of the 4. All right. So all the very best, everyone. Make sure you've subscribed to our channel if you haven't done that yet. And I hope you know about our marathon happening on Sunday. If you don't know, please check our homepage. Here we go with the first question and the only question we're going to be doing. AILG 2017 question पढ़ो. First step क्या था? Understand the paradox. I'll give you a few seconds. Understand the paradox here. उसके बाद ही हम question के options पे जाएंगे.
Send me a done once you're done understanding the paradox here. So Gopal has done it. Easy question है. Options. बताइए आंसर क्या होगा. Garima says A. Dhananjay also says A. And everyone else says A. See, it's doable, right? The correct answer absolutely is A. पैराडॉक्स क्या था क्वेश्चन में? एक ही कंट्री चाइना, लेकिन इसमें नॉट बेस्ट सेलिंग मोस्ट पॉपुलर नॉट चाइनीज फूड हम बहुत शौक से खाते हैं. साउथ चाइनीज भी अटरली इट्स द लीस्ट पॉपुलर. लीस्ट पॉपुलर किस रीजन से हो सकता है? टेस्ट की वजह से हो सकता है, इंग्रेडिएंट्स की वजह से हो सकता है, बहुत सारी चीजें. हमने सोचा क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसके लीस्ट पॉपुलर होने के. अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, dislike for the ingredients, dislike for the taste, could be many things. ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज ऑप्शन जो इनकी बात करे, जो ये प्रूव कर दे कि क्यों हम इसको डिसलाइक करते हैं, डिसलाइक नहीं, इसको हम कम प्रेफर करते हैं और इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं. पॉपुलर नॉट डिसलाइक, रिमेंबर ये ज्यादा पॉपुलर है, ये कम पॉपुलर है. ठीक है, सो ऑप्शन ए सेज ये इसीलिए कम पॉपुलर है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स हमको मिलते ही नहीं है, तो हम कहां से बनाएंगे? ना रेस्टोरेंट्स में मिलेंगे ना घर में मिलेंगे. सो सिंस वी डू नॉट गेट द इंग्रेडिएंट्स, इट्स नॉट पॉपुलर अमंग पीपल. On the contrary, the northern Chinese is popular because we get the ingredients. These days, northern Chinese cuisine is more time consuming. अगर यहाँ southern लिखा होता ना तो मैं मान सकती थी कि southern time consuming है इसीलिए कम पॉपुलर है, बट ऑप्शन तो कह रहा है northern time consuming है. डिस्पाइट दैट वो पॉपुलर है तो और बढ़ा रहा है मेरे पैराडॉक्स को इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग इट. सी सर नॉर्दर्न चाइनीज cuisine has recently become more popular. क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है, रिजॉल्व तो नहीं किया आपने इसको अभी तक. Immigrants from all parts of China brought their local cuisines with them. Yes, they did. और probably इसी चीज ने इमिग्रेंट्स के इंग्रेडिएंट्स लाने ने ही हमारे कंट्री में चाइनीज फूड को पॉपुलर किया. बट डिस्क्रिपेंसी तो अभी भी रिजॉल्व नहीं करी कि नदर्न सदर्न से ज्यादा पॉपुलर क्यों है. तो रीजनिंग मेरे को सिर्फ एक ऑप्शन में मिली है एंड दैट इज ऑप्शन ए. एब्सोल्युटली. सो make sure you sit for a scholarship test as well. I have to stop basking in the glory of my own photos looking like celebrities. 23rd July 11 a.m. Don't miss out on that. Sit for the scholarship test and see us in the classes very, very soon. And you can get thousands of scholarship there. We've launched a new batch for CLAT 2024 comprehensive course. That's the number of our counselors. Speak to them. And Dhananjay, I'm not answering that. Okay? Know more about our program. Sit for the scholarship test as well so that you make the most out of it. See us in the classes very, very soon. Make sure you subscribe to our channel. Make sure you follow us on Instagram, Facebook, Telegram. You also download our app on Google Play. Make sure you do all of that. And where to practice paradox questions from? Practice them from our app, topic test, paradox. बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस डे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सॉल्व करो उनको. I shall see you in the classes very soon. All the very best. Have a very good weekend. Work very hard. See us on Sunday. God bless all of you.